see, is it working? Welcome back, ladies and gentlemen. Sorry for the hiatus. हम लोग काफ़ी दिनों से लाइव कर नहीं रहे थे. हमारे साथ ये कंजी चपटी स्लेयर हैं. ये बड़े भैंस चोद हैं. उनको कोई शौक नहीं है डिविनिटी देखने का. डिविनिटी कल ही बोल रहे थे कि डिविनिटी की माँ की चूत सही है. तो आप उन सबकी एक ईमेल आईडी मैं आज एंड में दे दूँगा. इनको ईमेल करके मस्त गालियाँ देना, ठीक है, ताकि इनको थोड़ी अकल है. तो डिविनिटी जैसी अच्छी गेम लेकिन सड़ी भी गेम है डिविनिटी. सुन लिया आप लोगों ने. आप लोग इसकी मस्त गार्ड माने ना. मैं तो समझा के थक गया. ठीक है, आप लोग इसकी मस्त गार्ड माने. जब तक इसकी गार्ड नहीं लगेगी उस वक्त हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है. क्या हम लोग लेवल 15 पे पहुंच गए हैं एंड काफ़ी चीज़ें हमने क्वेस्ट कर ली और हम लोग एक्ट 2 के फाइनल फेज में अपेरेंटली. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. He doesn't respond at first. Instead, he stares, consuming you with his eyes. Master is master. He wants you to go to him, west of here. He barely seems to notice your repeated question at first. His eyes are dark pools in which your reflection is dry. You are so delicious. Please, go west. My master, a servant. And he wrings his hands as he answers you. Wrings them bloody. Loyal and... Go now. Save your questions. He shoves his... A loyal servant. The being lurches forward once more. Mid-stride, he catches himself and transforms the movement into a servile bow. Where? Close. Watch it. But not for you. For Master. Oh, your Master bot. I'm all for forests, but honestly, this seems a little much. The Forgotten and the Damned. The hulking brute recoils slightly from you and gestures towards deeper in the island. My master has use for you. Make haste, if you please. Sweet sir, handsome sir, ओए. seek out our master. He wants you. जिसको मैं sexy कह रहा था इसी से. Sweet sir, handsome sir. She knows us too well. और इसका नाम है The Abducted Bride. इसके पास handkerchief भी है. Yeah, the amount of lore in this game. She gives you a coy little smile. Her mouth is crowded with dozens of tiny, sharp teeth. Shreds of rotten flesh are lodged between them. What's that smell? Something delicious. Sack of gore. Okay, let's see what this master wants. So there he is. Oh, Melody. Melody did it. What is she doing outside the market? इसका नाम क्या है? सामने इसका नाम प्रोनाउंस किया जा रहा है. Chitlichia. Mistress of Agony. Chydylchia. Chitlichia. Sweet thing, succulent thing. We are so pleased to see you, but not as pleased as him. Succulent. You look into her eyes and see screams. You hear her gaze upon your body and taste her carnal, violent lust, metallic and sharp as a blade in your mouth. Go. Speak to the advocate. Make him happy. Bring him pleasure. And so bring him pleasure.
क्या चल रहा है? लर्न चल रहा है मेरा. Black ring failure. E horn of havoc. Your attention is appreciated, sir, but misplaced. You... Kill! Kill the bastard! Wear his skin! Dance, citizen! The elf's face, twisted in a grotesque rage, slowly calms. I beg your pardon. You need to speak to the advocate, the lizard by the table. He is waiting. हम लोग lizard नहीं हैं, हम लोग dragons हैं, you motherfucker. Motherfucker. Oh, ये जगह देखो, holy shit. It's one of the most unique places I've seen in this game. In any game, actually. The statue is a striking sight, a sizzling blue totem on a blood-red isle. Even stranger, a shard of polished iron peeks from under the statue's base. There's something hidden. Even a triple-sized troll couldn't make the statue budge. Whatever the stone figure guards, Blood of cocoon. Holy shit. She screams and screams and screams and never stops the screams. The roots quake and my bones quiver and still the screaming, the tree, the tree, the tree. The tree's the girl and the girl's the tree. And she screams and screams. Aye, the giant takes no... मैंने अपने companion से बात की. Speak. Oh. Yes, I am the Prime Scion. A revelation that came quite out of the blue, which is somewhat ironic, considering I'm supposed to be my people's foremost memory keeper. Quite slipped my mind, though. A slave scar will do that to a girl. To be frank, it exasperates. she looks down, an uncharacteristic cast of melancholy passing over her face. Gods, I was so young. Imagine it, to sit enthroned under a vast forest canopy, to look down upon a crowd of thousands, their bodies aglow with countless rays of golden light falling through the leaves. You hear their voices as one. One mind, one thought, and it's your name they incant, as if the word itself were magic. Sabine. They said it like I was the cornerstone of their existence. Isn't that silly? I didn't even know myself. Good question. It's a very lonely thing, indeed, to be the object of a people's worship. What is revered is feared at the same time. Very well said, Sabine. She absent-mindedly fingers her needle, hesitates. I used to love poetry. I used to love wandering the forests for days on end. I'd swim in the rivers and forget to dress after. It was fine. I was alone. Oh, nice. Oh, very nice. I'd bask in the sun, sleep nestled among bear cubs. Nothing out there would harm me. But always, they would find me, the scions. Always the mother tree would call me back. For one day, I'd be free no longer. One day, my legs would be roots. To wander would be but one lone memory among millions. Clearly not. Though I must admit that even to sit on that throne amid that eerie crowd, destined to become leaf and bark, was not so dreadful a prospect.
as what came next. When I decided to run away from the Mother Tree with only the moon for my guide, it was a terrible journey. Soft-leafed branches became vicious like whips. Moss-bedecked rocks became sharp like the stone axes of old. I grew weary. I was bleeding, in pain, and how I gasped when for the first time an animal eyed me with malice and growled. That is when I heard them, the whispers and the taunts, the low howls of men. The snare cut so deep. The blindfold, it made me panic. The dark. Oh yes, take her in her arms. Oh yes, take Sophia in your arms. Oh fuck, this is getting very sensitive. Somewhat to your surprise, Sabine doesn't recoil, but allows you to hug her. Thank you. That very first moment of darkness. I've never been so scared ever since. Then there was the stench of those men. The burn of the ropes. The jeers and the kicks. Until the dark went silent. Even those barbarians didn't dare speak in the presence of the Master. But I'll not speak of him and his methods. Not now, anyway. If ever. We are strong enough now. Strong as we deserve to be. Now we should find out what to do with all of our... क्या मेरा स्ट्रीम देख रहे हो? Pray speak. हाँ ड्राइंग भी कर रहा हूँ साथ साथ में. We are strong enough now, strong as we deserve to be. Time to find out how to make these वही powers आवाज नहीं फट shine. रही है इतनी. फट रही है आवाज़? फटे जा रही है आवाज. वही तो मैं कह रहा हूँ. What do you mean by फट रही है? Like जोर से आ रही है? अच्छा मैं माइक थोड़ा दूर कर देता हूँ. अब सही है. I can't say I've ever given them much thought. They're no more than an elven curiosity as far as I'm concerned, obsessed with the idea of becoming sentient bark. Sentient bark. Wonderful material once chopped, though, I'll give you that. Just look at the Lady Vengeance. ये बंदा टाइट है यार. He looks at you sternly, for all the world like a schoolmaster lecturing an errant brat. I think you can quite easily imagine what went on in that wagon. Almost a pity you weren't a witness, actually. For you would have seen the conception of a new world, not to mention an unparalleled lesson in lovemaking. Unparalleled lesson in lovemaking. His eyes attest to a desperation you've never seen him acknowledge in any way whatsoever before. He seems restless, angry, on the cusp of a tempest you never expected could ruffle his unshakable demeanor. Finally, I found her. Finally, I found her, only to lose her again. Oh, my scale. It's unthinkable, unbearable, to know she's in the hands of such villains. Aye. She's gone, damn you! Don't you understand? Just let me. He closes his eyes and begins to chant an old mantra. His voice mesmerizes, and as he calms, you too feel serenity descend upon the... There. Much better. I apologize for my irritability just now. What you don't realize, tell me. Have you ever been in love? Have you ever been in love? I don't know. Who should I like? Should I answer him as Ashil, Osama, or should I answer him? I really don't. Answer him as Inshal. Yes. Too many, unfortunately. Suffice to say, I am in love. In such a way that is the very core of my entire existence. My empire and my throne. I must have them back, there's no question about it. My offspring of dragons. I will see them born. Divinity itself, by all means. I crave it, but above all, above any of them, I cherish
her. Ask where that leaves you. Say that. I wanna know where this dialogue leads you. Well, of course, that doesn't mean I'm not very fond of you as well. It is just that... But I want to explain, I do. You must know ओए she's my होए deepest चॉकलेट इतनी मजे की है desire, that I've longed for since my soul slipped into consciousness. To see her taken away from me now, after our first meeting, it rends the heart. Words that mend. I thank you for them. I will scour this world in search of Sadha. If Sada. by mortal means she eludes me, I will take divinity for the purpose. What can I do for you? We are strong enough. Let's talk to Ivan. Well now, Ifan claps you on the shoulder. Nothing to say. Beast. not much of a landlubber, but sometimes I get no choice in the matter. First of all, I'm rash. If this comes as some kind of surprise, you've not been paying attention. Second of all, that tinkerer or weaponsmith or whatever she was, wasn't knitting a sweater. That thing was made to kill dwarfs with death fog, and I was made to smash it. Any questions? No? Good. You ever eat so much you feel like you're going to burst? Well, I'm feeling like that. Except it ain't my belly that's full, it's whatever place the source goes. I mean, is there like a source stomach we've got? How's that work exactly? I reckon the Meister will want to know about this. Then there's Justinia. I've got to get to Arx, and soon if I want to keep that death fog out of her hat. Oh shit, ये क्या हो रहा है? You will speak, or we will burn you leaf by leaf, vein by vein. We will flay your every last strip of bark until you bow to the ring. Here, Stadaga Naga, here, Utradaga. Your name, reveal your name. Your name will have, your back will break. Here, Stadaga Naga. Here, Utradaga. You will speak, or we will burn you leaf by leaf, vein by vein. Holy shit, Break ये your क्या कर रहा branches है? and ravish your roots until you squeal. Here. Oh my fucking lord. 7. Grant release to your fallen son. Corpses. Does every corner of this place hide grim secrets? यहाँ पे एक ओके ये रहा so there it is.
ये क्या है? The hulking warrior's eyes dart about in panic, but his voice is loud and इंशाल सोकर उड़ गया. even if it does not quite match the उठ move गया of his होगा, उसका lips. टाइम तो हो गया. You have been summoned. Go do your duty now. अभी कहाँ पर है इंशाल? Tree. Gotta get back. Gotta go. Can't let it out. Can't let them know. इसकी जॉब कितने बजे से कितने बजे तक होती है? यार कभी 9 to 5 उसने कभी बताया, कभी कहता है You're here to work. Are you also here to trade? I have much to show. I trade, you have coin. I have wares, nothing else matters. You like your nose? Then do not stick it where it's not welcome. We are where we are meant to be. We will be told when we are meant to be somewhere else. Your friend wanted a new deal. Wants to renegotiate terms. We have a wager. Some say she succeeds. Some say not. What say you? Good. Tell me, how do you bet? For the half-blood or against? She made a deal with our master. But her reward? Her obligation? Strictly confidential. But the advocate is quick to remind her. The master does not make deals lightly. The master does not break them. It would seem Malady is in trouble. मेरे पास इतना गोल्ड आ गया है, इतना गोल्ड आ गया, I do not know what to do. Good. Now, see what happens. Until then, do you wish to trade? इसका आना बड़ा अच्छा है यार, कोई ना. I wish I had this arm. So apparently क्या कहते हैं, मैं तो बताया था ना मेरा पिछला VTuber अकाउंट डिलीट हो गया था. Yes, I do remember about that. तब तुम्हें पता उसकी वजह क्या थी? पिछले पे मालूम? मैंने VTubers को सेक्सुअली हरास किया था. And can I ask why? ऐसी? There you are, and with just the little. वो 7 VTubers उनको तो मैंने बना के रख लिया है. जिनको मैंने सेक्सुअली हरास किया था. फिर मैंने क्या किया, रैंडम जापानीज अकाउंट्स के ऊपर अपना सब्सक्राइब मारा, तो फिर क्या कहते हैं, एक उनमें से अरेबिक थाई इंग्लिश वीट्यूबर थी, तो मैंने उसका लाइव 1 महीने से नहीं देखा था. जब मैं 1 महीने बाद आया ना, तो उसमें लिखा आ रहा था कि योर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक एंड मल्टीपल वायोलेशंस. मैंने बोला ये क्या हुआ? तुम ये क्यों करते हो? ये चिड़िया पे क्यों मारते हो? Give me one good reason. मुझे नहीं पता. चलो NPC से बात करें. I was just curious about the progress of your. तेरा I लर्न met your old सेरेटोनिन. buddy Jahan, if that's what you mean. I don't have buddies. I don't have buddies. So, did he help you with the matter at hand? He's putting me through my paces. I have a few more hoops to jump through before he'll help me. तुम्हारी बेकार USB वापस करनी है, मुझे अपना हेंटाई कलेक्शन भी वापस लेना है तुमसे. अपने घर बुलाओ ना. हाँ मैं बुलाने वाला हूँ तुम्हें. एक सेकंड. PS4 भी दे देना. I'm a demon, not a poodle. I'm a demon, not a poodle. अच्छा सही है, मेरा हेंटाई कलेक्शन वापस करना. Her eyes suddenly flash with fury, then fade back to normal. We'll discuss this later. Now. She pointedly ignores you. You're embarrassing me in front of the other agents of evil. तुम्हारी आवाज ऐसी भारी हुई है, वो जैसे काउंटर स्ट्राइक का NPC होता है ना.
हाँ हाँ अच्छा वो इसलिए भी लग रहा होगा मैं इस दफा ना तुमसे बात करते हुए माई माइक इज वेरी क्लोज टू माई माउथ क्योंकि मैंने यही नोटिस किया था लास्ट इन माई स्क्रीन के ऐसे लग रहा था ये क्या कर रहा है इस तरह की आवाज आनी थी तो मैंने कहा ये क्या भैड़ चुदाई है अश्विन गॉड द हेवी सेक्स गॉड ये क्या चुपियादों की खुशबू वाली आवाज आ रही है मेरी इतनी सड़ी मैंने कहा भैन चोद इसको रेक्टिफाई करना है किसी तरीके से ऐसे ना तुम बोल रहे हो तुम्हारी नॉर्मल है एवरीथिंग इज फाइन यू लाइक हाँ सामा क्या चल रहा है then I come in my Asian ठीक है ना क्या बोलूं my Asian intellects gives in हाँ सामी ये मैंने नहीं कहता सामी मेरी इतनी सड़ी मेरी गान सड़ गई मैंने बोला बहन चोद ये वो अक्षर है जिसको एक लड़की ने बोला था कि तुम्हारा एक्सेंट बहुत सेक्सी है मादर चोद गांड पे चढ़ गया माइक्रोफोन तरीका नहीं है ना इसको मतलब माउथ से चुका के रख सको इस तरह होना ये चुपका दो ताकि ये चुपिया लाइन मत चाटो मेरा बहन चोद The lizard's eyes are dark as polished coal, void of all light. A faint frost seems to cover the cracked and broken scales around his mouth. You have a reputation for both malfeasance and chaos. Imagine my surprise when it took you so long to find your way here. I see that certainly did not hinder you. Learned के अंदर हंसो आराम से हंसो कोई मसला ही नहीं है मैं I can wait all day क्राउड लगता है आज जो है ना चपटी सिम्स प्लेयर का लाइन खड़ा हो गया इन्होंने 10 मोटे मारी है ना आराम से ये ना खत्म हो गया बिल्कुल ही डेड हो गया माशाल्लाह अब गेम शुरू करते Well, here you stand, in the flesh, so to speak, and a finer collection of corpusculae I never have seen. I trust you are not opposed to a mutually beneficial accord between civil and gentle persons. Oh my god, he has lost it. You need not fear eloquence, my friend. Indeed, you need not fear anything. You could not be more secure in your well-being than you are amongst this congregation. I am here at the behest of my master to offer you a simple exchange. An offer of aid for the promise of aid. The epitome of civil reciprocity. Oh, the epitome of civil reciprocity. क्या language है भाई? Epitome of civil reciprocity. You and he possess a common foe. The power behind the Void Walker has made our lives hell, so to speak. Since the Divine Order unleashed Death Fog against the Black Ring and those darling woodland creatures. And as the gods have shirked their duty, perhaps we could come to a mutually beneficial arrangement pertaining to both of our objectives. Indeed, I can offer you the source channel that you seek for as a gesture of good faith.
Indeed, the creatures that strut about this realm so often do. Very well. तूने क्यों I ऐसा can see किया them straining सावा? against your fangs. Unleash them, Godwoken. Ask your questions. Because it is expeditious to do so. My master would have this isle cleared as quickly as possible. इसका भी कोई मास्टर. The lizard looks about to make sure no one else can hear, leans in and whispers conspiratorially. मेरी अम्मी तो घर ही नहीं आई अभी तक. ये इतने सारे नए लोग सिखा रहे हैं ये demon lizard. मैं सारे लोग डाउन कर रहा हूँ. And if you are to become the new divine, I would much rather be an ally than a foe. After all, the power you wield will be as a great sword to my master's butter knife. There are legions that would follow you, myself included. Your power would be unfathomable. Assuming, of course, you take it for your own. My master has been troubled by the presence of the void as it creeps ever forward, encroaching on areas in which he himself once ruled supreme. None more so than this island. There is a tree at this island's core which has special significance to my master. Think of it as hallowed, sacrosanct ground. But the black ring maggots writhe all about its trunk. And you will exterminate these termites. It is simplicity itself, in truth. Why, the only thing you truly desire, or certainly the only thing you truly need, reveal unto you the location of the Council of Seven. My master has dealt with many of your small-minded creatures with a hunger for power, out to save themselves or loved ones or the world, some fantasy or another. अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग एनपीसी मुझे ये नजर आ रहा है, द एडवोकेट. बहुत हरामी है ये, इसको सब पता है. इससे पहले मुझे एक और एनपीसी मिला था राइकर नाम का, वो भी काफी अच्छा था. But all are willing to strike a contract means their success. One was even willing to give up the location of this council to earn my master's boon. How felicitous that you merely have to spill a little blood to earn the same. One may ask, one may inquire, but one should be eternally wary of what one demands, and one should heed that twicefold for information like this. There is power in names, power far, far in excess of your mortal limits. I'll not deliver that power unto him. इसने हमारे ऊपर थूका. हमने कहा ये जो creatures आ रहे हैं, हमने ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका कौन है, गॉड का नाम क्या है. उसने बोला उसको बताने से पहले तुम मॉडल तुम लाइट खाओ. उसने हमारे मुंह पे टेक दिया. Perhaps you utter some truth. Surely his ear could not be eternally cocked. Eternally cocked. Very well. The master of the Voidwoken is a creature older than any demon. My master will never speak his true name, but the Black Ring know him as the God King of... His savage minions have found us! Oh, bhai! Oh, bhai! Oh, bhai! Oh, bhai! जैसे उसका नाम लिया Voidwoken आ गया. Oh shit, bye. Reload. I was not ready for this. Fucking hell, man. तुमने मोलकबाल को डिफीट किया था उसमें स्काईरिम में?
नहीं स्काईरिम में मैं इतना आगे नहीं पहुंचा। मुलक बाल कौन था? I can't recall. मुझे भी नहीं पता मुलक बाल कौन है। मैंने बस एक रैंडम स्काईरिम कैरेक्टर को पिकअप किया, तब उसको गिंशाल के प्रोफाइल के ऊपर लगाया था नाम, तो बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने बाद में मुलक बाल रिमूव कर दिया। I can because it the lizard, and there are legions that would follow you. My master, there is it, and you will exterminate. Why, the only thing you truly desire, my master. But oh, how felicitous that you merely have to spill a little blood to earn the same. My master's identity is of no practical consequence in this matter. You need concern yourself with nothing barring the truth that my master always honors his. Your smoldering half-demon pet can attest to that. She is the one that comes to me, helm in hand, in a sad attempt to beg and snivel her way out of previous and quite binding contract. Alas, I am not at liberty to say more. My master values privacy above all else. He would not take it kindly if he discovered I had been indiscreet. She pointedly ignores you. Her eyes suddenly... We'll discuss this. She pointedly ignores... You're embarrassing. हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे किसी बंदे को पायो किनेटिक दे। I think for this quest we need थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं इस क्वेस्ट के लिए। क्या कहते हैं? सुट्टा? Smoke billows from हाँ गेम के अंदर मतलब तुम्हें क्या लगा? मैं एक्चुअली में सुट्टा मारने का कह रहा था। हाँ ना, हाशिम सुट्टा मारता था ना। हाशिम तो बड़ा है। हाशिम बड़ा है, बहुत बड़ा। हाशिम तो शुरू जमाने से बड़ा है। चलो मैं तो फिर भी शरीफ था। हाशिम तो भाई नेक्स्ट लेवल भाई। तुम शरीफ थे? हरकतें तो बड़ी चुतियावेगी नहीं मैंने। अरे वाह रे, अरे वाह रे। बहुत बाप पकड़ा आपने। Right, good to see you. Just say the word, Governor. No problem. In return, much obliged. बड़े डल्ले हैं आप। डल्ले को देख के फौरन पहचान लेते। No problem. In return for much obliged. लाइन क्यों नहीं चूसता? Strange contraption. It's adorned with hoses, levers, and screws. जब बनाना खाता हो तो वो लंड ठूसने के ही कोई तो। ओ मादर चोद, ओ बहन चोद, ले बड़े लंड हैं आप कसम खुदा के। मर जाए आप। अभी तो अप्रैल 5 को बहुत बड़ा चुतियावा होने वाला है। You have returned, but not with the spectre of death. What would you know before you return to your bloody business? One may, and one should. Very well. His savage minions have found us!
यस अब फाइट करते हैं। कितनी इनिशिएटिव है मेरी? 53। फक यस बिच। ओह फक मेरे पास एंटेंगल नहीं है। ग्लाइड यही तो चाहिए। Oh, demonic magnet shower. Oh, hi, I'm loving this advocate. You know what? Talk. Advocate भाई बहुत और इतने एलोगेंटली बात करता है ना ये बंदा। डॉगी पता नहीं पागल चूत हो गया, पता नहीं क्या चिपचापी हरकत की है इसने अभी। ओ भाई मार भी दिया इसने। ओ इनविजिबल चला गया भाई, जबरदस्त। बसातान द विश मास्टर। सिर्फ एक ही? अच्छा सिर्फ 3 एनिमीज है, इतने ज्यादा नहीं है। जबरदस्त। क्या पागल है क्या? मुझे क्यों मार रही है? अजीब बहन की कुछ। ओए होए क्या छलांग मारी है उसने। जबरदस्त, मुझे साइलेंस भी कर दिया। चूतिया वैम्पायर। ओ भाई ये चीता बंदा है। ओ फैन चोद, अभी मैं मरता, अभी मेरी गांड फटती। अच्छा ये मुझे नहीं देख रहे कि मुझे डैमेज हो रहा है, मुझे डैमेज नहीं हो रहा है, परवाह ही नहीं है इनको। ये बस बोल रहे तुम्हारी गांड फटा है। मारने दो इनको। इसने सिनेमन एप्पल मफिन भी खाया हुआ है। चलो भाई हो गया खत्म। अब क्या हुआ? ओ भाई
मारो उसको बहन चो। एक और आ गया। वही मैं सोच रही थी किधर है, मैंने वॉकथ्रू में इसको देखा था। आई थॉट ये टैक्टिशियन में होता है, इसमें नहीं है। खाना क्यों खा रहे हैं लोग? हाँ बोलो। तुम्हें पता है वो, अब मैं भी इतना सिक एंड अनॉयड हो गया हूँ। ये क्या कहते हैं, जो वीट्यूबर्स है ना, दे आर स्प्रेडिंग लाइक एवरीवेयर, हर जगह पे हैं ये। मतलब मीडिया सेफ ही नहीं है। कोई रैंडम बंदा होएगा जिसने क्या कहते हैं स्ट्रीम परफॉर्म किया होगा, नहीं कोई रैंडम वीट्यूबर आएगी अपना कमेंट छोड़ के पूरा लाइव तबाह करके चली जाती है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, मैं तुमसे ये कहना नहीं चाह रहा, मगर क्या कहते हैं, तो बाहर वाले मुल्क में हो, सही है, तुम कनाडा में अपना ऑनलाइन स्ट्रीम के ऊपर स्पीच दे रहे हो और तुम समहाउ कितने फॉलोअर्स पे पहुंच जाते हो, 200 फॉलोअर्स पे पहुंच जाते हो अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर। वो भी बड़ी बात है अगर तुम पहुंच गए वहां तक। तो ठीक है, तो तुमने स्ट्रीम अपना ऑन किया, फिर तुमने ऐसी वो जापान के बारे में अच्छी पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स ब्रिंग अप करना शुरू कर दिए, बट फॉर सम रीजन एक रैंडम फीमेल वीट्यूबर आई और उसने बकवास मारना शुरू कर दी तुम्हारे उस पे, और फिर तुम्हें सब्सक्राइब करके चली गई। अब तुम्हें कैसा सा फील होगा इसके बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा फील होगा एक्चुअली, बिकॉज यू नो वो बढ़िया बातें होती है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा लंग चूसना चाहती है। उससे लिटरली कुछ स्ट्रीम चैट वीडियो के ऊपर 3-4 अल्फाज लिखे होंगे जापानीज में, और फिर तुम्हें सब्सक्राइब करके चली गई होगी। और फिर जब भी तुम लाइव करने आओगे, वो तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा लाइव देखने आ रही होगी। इसका तो यही कंक्लूसिव एविडेंस बनता है, वो मेरा बहुत सख्त किस्म से चूसना चाहती है। और पता है उसकी वजह से क्या होगा? उसके रेड की वजह से तुम्हारे जितने व्यूअर्स हैं वो उसके ऊपर सिम्प करना शुरू कर देंगे उल्टा, वो तुम्हारा लाइव नहीं देखेंगे फिर। At least the vital components have withstood the onslaught. Tell me, do you require further knowledge? Have you lost all sense of reason? I will not risk any further attention from his subjects. My master has been trapped. There is a tree, and you will exterminate these. My master, your smouldering half-demon eye. Alas, I am not at liberty to say more. My master values privacy above all else. He would not take it kindly if he discovered I had been indiscreet. चलो बहन भाई, ये तो नहीं बता रहा। तुम्हें पता है मैं इतना भड़वा हूँ, मैं 2014 में पता है क्या चाह रहा था? मुझे एक अच्छा सा स्मार्टफोन मिल जाए और बहुत महंगा सा लैपटॉप मिल जाए। मुझे दोनों चीजें मिल गई हैं और मैं फिर भी रंडी रोना करता हूँ। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बस मैं थोड़ा वो उस पे फोकस कर रहा था, गेम पे। तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? मुझे टेक्नोफोबिया कभी भी नहीं था। मैं चिटियाबे की बकवास मार रहा था। मैं सऊदी अरब में क्या कहते हैं जुबैद का मोबाइल लेता था और उसके ऊपर क्रीपी पास्ता पड़ रहा होता था, और मैं उस जुबैद के वो मोबाइल के ऊपर क्या कहते हैं स्मॉश देखता था और प्यूडीपाई देखता था, उसका जो स्मार्टफोन था। अच्छा,
और मुझे पता है बहुत टाइम से 2014 से एक बहुत महंगी अच्छी सी स्मार्टफोन चाहिए थी। वो ये वाली फोन है मेरी जो मैं 2018 से यूज कर रहा हूँ, ये ओप्पो की। वो भी मिल गई मुझे। और मुझे एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप चाहिए था। कंपनी वालों ने अब्बू को लैपटॉप दे दिया एक, और वो लैपटॉप मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे दोनों चीजें मिल गई हैं, मगर मेरा रंडी रोना कम नहीं हो रहा। तो मुझे अब और बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे फिर से तवाफ करना है। बस लाइक खा दो ना तुम। मैं ग्रेटफुल नहीं हो सकता जितनी सारी मुझे चीजें मेरे पास। फकिंग क्लिप आर्ट स्टूडियो का एक्सपी पेन भी पड़ा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे काम नहीं करना। तुम लाहौर कब जा रहे हो? मैं थोड़ी जा रहा हूँ। जाओ ना जैनब से मिलने। जो टिकट के पैसे तुम्हारा पापा देगा? ओ हाँ, मैं भूल गया तुम्हारे पास वैसे भी पैसों का इतना मसला होता है। एक्चुअली मेरी अम्मी जा रही है ट्यूसडे को। मैं इसी के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाह रहा था। जो नॉकडाउन गया मैच हार के। भाई सीन ये है कि मेरी अम्मा जा रही हैं ट्यूसडे को, और मेरे अब्बा जा रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो तुमने बोला था ना मेरे घर आना, तो जब मेरे अब्बा जाएंगे ना मैं तुम्हें उस दिन बुला दूंगा। तुम रात को रोक भी सकते हो अगर तुम चाहो ना, क्योंकि कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मैं रात को नहीं रुकूंगा। मैं अपने अब्बू मुझे पिक कर लेंगे 8:30-9 बजे, और फिर मैं ड्राइविंग हाँ करूंगा और फिर घर जाऊंगा। सही है, ऐसी विश। तो जैसे अब्बू जाएंगे बाबा जाएंगे मैं तुम्हें बुला दूंगा। तुम्हारे अब्बू को वैसे भी मेरे से चिढ़ होती है जब भी मैं घर आता हूँ। तुमने मुझे बताया ना तुम्हारे अब्बू का एक इश्यू है कि कोई भी घर में आता है वो फैमिली मेंबर के अलावा हो, हाँ तो ये उनका मसला है। को वो हो जाती है, हट जाती है उनकी। हाँ उनका इशू है। यार तुम कनाडा चले जाओगे फिर क्या होएगा?
Now that was a good start. Oh my, take on the fight. Oh man, son. Oh, that's not that bad. मुझे लगा मैं गया. ओए होए हीरोज बदल गई. क्या बदल गया ब्रो? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक सस्ती रंडी दिखाई थी जिसका नाम हीरोज था गूगल इमेज सर्च के ऊपर. तुमने बोला था इसके अंदर और लेडी गागा के अंदर कोई फर्क नहीं है मगर हीरोज का रंडी रोना ज्यादा है, हद से ज्यादा है अपने घर पे. याद है क्या हीरोज? आई कांट रिकॉल, आई एम सॉरी. मैंने तुम्हें एक काली पतले कपड़ों के अंदर सफेद बालों वाली फॉक्स वीट्यूबर दिखाई थी जिसका नाम हीरोज था. और फिर मैंने तुमसे फिर मैंने गूगल इमेज सर्च के ऊपर लेडी गागा की तस्वीर निकाली थी. फिर मैंने बोला था इन दोनों में फर्क क्या है. उसने बोला था वो जो सफेद बालों वाली फॉक्स वीट्यूबर है ना उसका रंडी रोना ज्यादा है, लेडी गागा से लाख बेहतर है. अच्छा सही. ओ भाई क्या डैमेज कर रहा है. अभी इसकी गांड मार. तुमने मेरा कंप्यूटर उस वक्त प्लग से पीछे क्यों नहीं निकाल दिया था वो जब मैंने कानून वीट्यूबर लगाई हुई थी अपने कमरे में जब तुम आए थे मेरे घर पिछले साल. कब अगेन? मैंने सुना नहीं. मैंने तुम्हें पिछले साल अपने घर बुलाया था, याद है? मगर एक वीट्यूबर चल रही थी बैकग्राउंड में और तुम 4 घंटे के लिए आए थे, 4 से 9 बजे तक. अच्छा हाँ, तो वीट्यूबर चले जा रही थी बार बार. तुमने कंप्यूटर का प्लग क्यों नहीं निकाल दिया पीछे से? अच्छा नहीं, तुम्हारा घर है, नॉट माय रूल्स ब्रो. अच्छा ये बात है. यही हो सकता. बस मैं इतना ही पूछ रहा हूँ. वो क्या कहते हैं, तुम चाहते तुम जेंटली वो प्लग निकाल सकते थे पीछे से. आई मीन तो अपनी गाड़ी चला सकते हो मेरे घर में. The pestilence has been cleansed. Resume your business. मजे की बात ये क्या कहते हैं, PS4 मैंने तुम्हें दिया था, तुमने मुझे नहीं दिया था PS4, पता है? एंड इस सेकंड में इस एनपीसी की हाँ कितनी अजीब बात है ना. मैं इस एनपीसी के डायलॉग सुन लूं 1 मिनट. As per our terms, the location. The lizard leans in close, his rancid breath clogging your throat. As you look into the darkness of his eyes, you see an island. You see the winds that will carry you there. You see the... Now, Godwoken, we both have what we sought, and thus all guarantees of safety are expired. You need not fear me, but this island hides more dangers than my claws. I recommend you go. But should I find you broken on the beach, I will shed no tears. It is something of a relic. A relic that has had its spirit defiled by the Black Ring. Now, I have work to do. This place must be cleansed, it must be healed. And you must surely know that your welcome is wearing... The spirit looks around with wild panic, clawing through its spectral mass with fevered nails. The demon feeds. The demon feeds from the ring. The demon protects.
We must know what the demon protects. The demon has an advocate. The advocate kills. The demon has a secret. We must... Ancri, Areno Rotomiso. Can you feel it? The twisted pain. It's everywhere. They didn't die quietly. How satisfying. Godwoken, this tree is beyond sacred and is not for your mortal hands. I am doing what I can to heal it. You would be wise to do what you can. Godwoken. काफी कर लिया हमने Dear me, have you lost your path? Simply choose a direction and ambulate until you strike the shore. Once there, well, perhaps you should keep walking on that course. Hold your breath. Dear me, once there... Dear me, have you lost... Once there... Dear me, have you lost your path? Simply choose a direction and ambulate until you strike the shore. Once there... क्या कर रहे हो अभी? पेंटलेस बैठा हूँ। पेंटलेस बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम्हारा लाइव देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मैंने लाइव पर मोट मार रहा हूँ। नहीं 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 वोट नहीं मार रहा। हैं तो पेंटलेस बैठे हुए मेरा लाइव देख रहे हो, मैं और क्या अज्यूम करूँगा है? हाँ उस वक्त जब तुम नंगे मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड खेल रहे थे तुमने उस वक्त नहीं मेरी फीलिंग्स का एहसास पूछा था। जब मैं कपड़े पहना हुआ था तुम नंगे थे। वेरी नाइस कमबैक, वेरी नाइस कमबैक, आई मस्ट से। बहुत बड़े बैंक की छूटा। तेरी प्राइवेसी लीक्ड हो गई है, पूरा अकाउंट तबाह यूट्यूब का।
लंड खाया भेड़ की चूत इसी का वेट कर रहे थे ना आप यही सुनने का वेट कर रहे थे मेरे ख्याल से है ना माधर चूत तुम्हारी बोर्ड में कीड़ा तुम्हारे हाथ में लुल्ला तुम्हारी चूट में अंडा और सुना बोलो और सुना बहुत 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 तुम्हारी वीट्यूबर्स की गार्ड में क्या डालो सी डॉग का लुल्ला डालो लोहे का दो चूहा मोर लाइक चूट की ओह नो तुमने आयरन माउस को चोट दिया शिट चोट क्या दिया उसके अलग अलग में मैंने अपने लोड़ा घुसाया CW डॉग की बीवी The imposing statue, even a triple side. दूर दूर से क्यों हंसने की आवाजें आ रही हैं आपकी What's this? I found something. दूर दूर से जैसे कोने में जाके ना अपने अंधेरे वाले कोने में जाके हंस रहा ओह नो तला की बकवास Volumes upon volumes. A trove of history and knowledge. I've spotted something. The spirit urgently passes a hand across the spines, whispering each tome's title as she comes across it. No, no, it isn't here. This is impossible. You, my brother, help me find it. There is little time. This is no time to feign ignorance, my friend. The Doctor's arrogance may end us all. He has released a dark presence upon us.
It must have never seen the taming. And yet, I see no sign one was ever here. You must help me look. Her hands fan furiously across the tomes like a pianist's upon the keys. You must be feverish. I can't explain why you seem so ignorant, child. I would not be surprised if sickness had spread across the isle. The doctor was surely ill to risk all that he's been. Now be silent. Your question. She hushes you with an index finger held to your lips and continues her... The spirit urgently... No, you, my sister. Help me find it. There is little time. This is no time for pranks, my friend. And yet, I see no sign one was ever here. Her hands fan furiously across the tomes like a pianist's upon the keys. You must be feverish, though. Now be silent. She hushes you with a... The spirit urgently... No, you, my brother. Help me find. This is no time for a dark... Her hands fan furiously... A malignance more rotten than any I've known, brother. तुरंत इसी को सुन रहा हूँ मैं बात करता हूँ एक सेकंड I'd have offered myself up for the sacrifice had I... Now be silent. She hushes you with an index finger... अच्छा उसकी उस पे होगी ओह अच्छा 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 स्कॉलर बहुत इम्पोर्टेंट टैग है यार इस गेम में बाकी सब बेकार है I can feel my source powers draining at the merest touch. Tenebrium is truly... I can feel my source powers draining at the merest touch. Tenebrium is truly a material of... I can feel my source powers... Another pyramid? Oh, very useful. हमें अपना फाइनल टेलीपोर्टर पिरामिड मिल गया very nice The transparent artifact glimmers of its own accord, as if conducting light from another world, another plane of living. As your hand nears it, it shivers and...
हमारे साथ लो से खड़ी में कैसे छोटी सी बच्ची लग रही है ये देखो। मेरे बराबर तो आगे नहीं गया रुक। अच्छा ये देखो मैं जरा थोड़ा सा स्नैक लेकर आया। लोसे को देखो कैसे खड़ी है मेरे सामने छोटी बच्ची। छोड़ दो छोड़ दो।
You listen closely, but while you think you've heard similar utterances in the past, you cannot make sense of its words. Yes. I'm back. It's a crystal blade, seemingly separated from its hilt. It's clearly of a kind with the object you recovered from the Surrey tomb. The object repeats its indecipherable... What the fuck, ये chest किधर है? Second time's a charm? Or have I asked too much of you? The blade quivers as Tarquin nears it, and hums a response. An unfallen reveil. Amadio Lucio de Anne Drita Dumore. Oh, very good. Very... This, my friend, is the key. Give me some time, and every deity in existence will tremble at the sight of you. He holds out his hand, expectantly. Lovely. Now, if you'll excuse me... Tarquin turns away, but continues to mutter excitedly, almost religiously, about anathema. मसाक 2 आज खत्म हो जाएगा मिस्टर सलाल most likely. मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाएगा. ओह, कोई आ गया है Red Prince को. Red Prince, I am the one who has been hunting you, but you cling to life all too tenaciously. We must speak of the reason for your expulsion from the ancient empire, and we must speak of the Red Princess. Find me on the Nameless Isle at the Temple of Zor Stissa. In the presence of the goddess, let war and shadow meet. Ooh. You're back! Of course. Told you I would, didn't I? Sure thing.
Back again, eh? तुम्हें हमारा नया वाला ड्रैगन कैसा लग रहा है? ये वाला बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है या वो तुम्हें थोड़ा खतरनाक लगा? हाँ वो रेड एंड व्हाइट वाले से ज्यादा बेहतर है और मुझे ब्लैक वाला बनाया था वो डॉग फायर ड्रैगन सड़ा हुआ था What the fuck? वो बकवास था तो मैं तो उसका लेके खड़ा हो रहा था। मेरा माइक चेंज हो गया है गोल्डन वाला ज्यादा बेहतर है गोल्डन वाला मैंने ये प्लान किया इसको एक्ट 4 और 5 में थोड़ा चेंज करेंगे। एक्ट 4 के दरमियान में थोड़ा अगर नया आर्मर सेट आएगा ना। Let's see. Called for the junk you sell, then. Junk? Why, I offer nothing less than the wisdom of the ancients. Vapid fiction, not the knowledge that we have had. Shame I had to leave the stone garden behind. I feel so at home among the graves. और मजा आ रहा है आज की स्ट्रीम में मजा आ रहा है। हाँ तुमने मुझे जगा दिया। बस ये तो आपके भाई की स्पेशलिटी है।
अब हम क्या करें? एक सेकंड, give me 5 minutes. शर्रीला मिक्स पिकल चंक्स, अचार का चटखाना, अब जदीद अंदाज में। Farmer crops grown in any region. While utility skills challenge with your hunter or skin graft. If you need more AP to finish your target before using one of these skills, then pop adrenaline. Did a lot of my build guides at this particular part of the game. The reason for that is I felt like it was the point in the game where everyone would have access to everyone in your party is self-sufficient like the Eternal Warrior is. You're not going to have any problems. You keep your armor topped up, you keep the enemy CC, you keep the pressure on them, you're not going to have any issues, especially in Tactician. You're not trying to solo everything with a non-normal build. So this is a level 16 version of the build. I did a lot of my build guides at this particular part of the game. The reason for that is I felt like it was the point in the game where everyone would have access to the things that I had access to ability-wise, because a lot of them unlock around that level. And point in the game where everyone would have... Okay, he's wearing strength armor, primarily strength armor. Have access to things that I had access to ability-wise, because a lot of them unlock around that level. And where everyone would have build, and everyone in your party is self-sufficient like the Eternal Warrior is. You're not going to have any problems. You keep your armor topped up, you keep the enemy CC, you keep the pressure on them, you're not going to have any issues, especially in tradition. You're not trying to solo everything. So this is a level 16 version of the build. I did a lot of my build guides at this particular part of the game. The reason for that is I felt like it was the point of the game where everyone would have access to the things that I had access to. His damage is not as, my damage is not as high as his. And you know, you get too much further into the game, and it doesn't really matter. The game is a whole lot longer without going into too many spoilers. And you know, from the game, and it doesn't really matter. The game isn't. Okay, 15 armor now. Boy. A whole lot longer without going into too many spoilers. And you know, from this point forward, you just become so powerful. You can just wreck everything with what you do. So I wanted to stop here and even years a bit. And you know, ये armor कैसे मिला इनको? मुझे तो ये armor नहीं मिला. Let me search fans. एक armor में check करना चाहूँ. We'll be right back in the stream. वैसे आपको मैं बताऊँ चपटी सिंपल चपटी चप्पल मैंने चपटी सिंपल बोला था लेकिन चपटी चप्पल निकल गया मैं चपटा सिंपल हूँ चपटी सिंपल नहीं हूँ मैं गे हूँ एक्सट्रीमली अच्छा चले आप चपटा सिंपल है आप चपटा चपटा क्यों नहीं बन जाता बस चपटा लुल्ला बन जाए आप चपटा लुल्ला से ओह इसके पास पड़ा हुआ यार मैं ओह फक मैंने ये देखा ही नहीं चपटी चप्पड़ चपटी चप्पड़ ओके क्राउड वे बैक हम नए देख रहे हैं यार में कहाँ से मिलता है जैसे केस उसके पास से मिलता है वेरी नाइस
और मिस्टर चप्पी चंपा चंपल पता नहीं जो भी आपका नाम है बहन सो कहाँ गया अफगानिस्तान What the fuck? Okay, so. Oh no, don't tell me. Where are you, Baristan? सब इधर तो नहीं आ गए? हाँ, सब इधर आ गए. Okay, इधर है. एक ये रहा. हाँ ये. Good to be back. Good to be rid of that. Speaking of filth, I hear your half-breed got her answer. She did not. Our master is patient, but is not lenient. She made a pact. He'll see that she keeps it. Ashamed to have lost your wager, but be grateful the stakes were lower for you than for her. I'm not the mongrel's keeper. It's not my hand. She left as you did your work. Look, do not touch. Not until you see you again. Okay, hoy. 2 strength, 3 constitution. 1 in 200. ठीक है. Water and earth resistant, 3 constitution, 1 retribution. Oh my, this armor is fucking. चेक ही नहीं करते हैं हमें. नहीं मैं. Give it to me, bitch. Oh, kind is black. Oh shit. That is purple. Color change. Combine with the yellow. Ooh. 3 minute damage actually lower कर रहा है. काफी कम कर दिया यार. True warfare, oh my. उसका ज़्यादा नहीं. From this point, then it doesn't really matter. The game isn't a whole. 385, level 15. इसका ज़्यादा क्यों armor? Why? अच्छा इसमें ड्रोन भी तो है. Extract. Areno rotomiso. कितना ज़्यादा था? तुम्हारा भी है ना. नहीं यार, ये तो क्या कर रहे हैं? इसमें आर्मर ज़्यादा है. What the fuck?
सलाह भी है बताओ, ठीक है। ये मुझे चीज समझ नहीं आ रही। Why? A lot longer without going into too many spoilers, and you know, from this point forward, you just become so powerful. You can just wreck everything, no matter what you do. So I wanted to 143 longer without going into too many spoilers, 70. and you know, from this point forward, you just become so powerful. You can just wreck everything, no matter what you do. So 143. Oh my God! इसके पास इतना armor कैसे? Holy fucking shit, Mrs. Lal. Oh, Mr. Chapta Champar. And show इतना armor कैसे चला रहा है? Lone wolf भी नहीं है? नहीं, it's not lone wolf. What the fuck is going on? Your Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app. बातें मत करो. Google Home है. वो बातें चलती हैं इसमें. I don't know. Whatever type of companion you need, I can provide. and 413. अच्छा इस फंडे के पास जाए तो क्या चल रहा है इसका, क्या सीन है? इंसान के बाल कितने लंबे हो गए? इंसान और बड़े कर रहा है। आई थिंक उसने साइडों से छोटे कर दिए। ही इज गोइंग फॉर दैट, मतलब आई एम अ बिच लुक, इफ यू नो व्हाट आई मीन। Oh. E-boy. Yep. Sick. Basically, I think उसके माइंड में ये चल रहा है आजकल that कि उसके ऊपर लंबे, वैसे शुरू से ही वो यही सोच रहा था आई थिंक कि उसके ऊपर लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगता है, तो He's going for it like मैं करूँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। I'm not sure. उसको छोटे बाल नहीं अच्छे लगते, मैंने उसको कभी भी छोटे बाल में नहीं देखा। तुम्हें पता है मुझे जब से मैं क्रीक विस्टा से तुम्हारे घर से आया हूँ वापस, यस, वो मेरे ख्वाबों में आना बंद नहीं हुई है वो चपटी लड़की। अच्छा चपटा चंपर, मुझे लगता है आपको ना वुमेन फोबिया, तुम कोई सी भी औरत देखते हो ना जस्ट तो स्लाइटली भी मतलब तुम्हारी नजरों में आ जाती है, बस वो ही घूमते रहती है आगे पीछे। अच्छा ये वो सेइंग कि तुम्हें टेक्नोफोबिया नहीं है, तुम चिड़िया पे मार रहे थे, सब ब्लाइंड था, सब तुम भोसड़ हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे मैंने काफी हद तक सस्पेक्ट किया था तुम ऐसी बातें छोड़ रहे हो,
गो अहेड, थोड़ा और जरा बताएं इसके बारे में। देखो, मेरा ना पहले ये गोल था कि वो क्या कहते हैं, तुम्हें याद है वो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाँ, मेरा मेन एम ये था 2014 में कि खाला से एक तो मैं क्या कहते हैं 2 चीजें मंगवाऊं। एक स्मार्टफोन मंगवाऊं बहुत महंगा सा 1 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का लैपटॉप मंगवाऊं गेमिंग डोटा के लिए। जब मैं क्या कहते हैं अपना वो करना चाह रहा था, तो जाके इनिशिएट हुआ है इतने टाइम बाद। मेरे पास महंगी लैपटॉप भी पड़ी हुई है और मेरे पास वो लैपटॉप वो भी है, फोन भी है। अच्छा, यस। सही। तो और रंडी रोना के बारे में क्या कह रहा था? बस मैंने बहुत रंडी रोना कर लिया, यहाँ पे मार लिया है। नहीं, मैंने क्या कहते टेक्नोफोबिया का बहाना ढूंढ कर इतना रंडी रोना किया था। मैं अपना मोबाइल नहीं चेंज कर रहा था, मैं इतना ज्यादा अम्मी का बैलेंस जाया किया, देर कर सका था अपने अब्बू से एक सिंपल मोबाइल के लाकर। अब्बू से कभी बोला ही नहीं मुझे अपने ये स्मार्टफोन मिलना है मुझे, you know? You have kept your word, and we have kept ours. But our business... As you leave, you can't help but look at his eyes. रंडी रोना तो मैं ही करूंगा। और We must know the secret. हाशिम का घर देखा था, कैसा मैसी था सर। कौन? आशिम? The fuck? बड़ा मत होता, आपने अंदाजा नहीं करा। याद है अपनी कीचेन को क्या किया था? पूरा मेल्ट किया था, फिर वीड स्मोक की थी हमारे सामने। ऐसे ही था, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हरामी था, बहुत बड़ा मुथल था, बहुत चीज था हासिम भाई। कुत्ते आजा मादरचोद। किसको बुला रहे हो? कुत्ता जो मुझे देख रहा है। ये क्या है? एंड राउफ द पेनफुल। ओ दूर से मार रहा है। ओ मादरचोद। ओ शिट। ओ भाई। Magnus Cole. So we have a beast जिसको हम लोग मार नहीं सकते क्योंकि वो living on the edge है।
तुमने 2018 में किस कलर की टी शर्ट पहनी थी जो तुम्हारी फेवरेट थी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी थी मैंने कब? 2018 में। इस साल मैंने जो तुम्हारे लंबे बाल थे। बहुत सारी ब्लू कलर की टी शर्ट हैं? एक ब्लू कलर की शर्ट। मरून? ब्लू 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 किस ब्लू किस कलर की शर्ट? ब्लू बहन चोद। हाँ ना, तुम्हें ब्लू वाला है ना? ब्लू BLUE। हाँ ना, हाँ ब्लू ही तो बोल रहा हूँ तुम्हें। मैरून मैं क्या? तो कौन सा ब्लू? तो कौन सा ब्लू? ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं। अब इतना नहीं बता मुझे बहन चोद। चल तो सही है, ओके। बस इतना ही पता करना था। ये क्या कर रहा है? कुत्ता भागा भैंचोद। ओ भैंचोद कुत्ता भाग रहा है। ओ मादरचोद घूम फिर के आया मुझसे मिलने। ये भी सो हुआ है। Zerachiel the Cursed। ओ भैंचोद टमाटे मारे इसने तो। Zerachiel the Accursed, Quisivalent the Malevolent। अलर्ट स्पिरिट मार रहा है भाई। मैजिक डैमेज। Black Ring. Was it the death fog that got... जबरदस्त। Yeah, bitch। दानियल पतला कब था? कभी भी नहीं, आई थिंक। मैंने उसको पतला कभी नहीं देखा। I'm being honest। बचपन की उसमें तो पतला था। वैसे दानियल आजकल कर क्या रहा है? मुझे मार रहा। तो नेक्स्ट वीक में नहीं जा रहा? रमजान आने वाले। कहाँ नहीं जा रहा? Fab streak। I mean non-fab streak। हाँ मार तो दिया, चलो उसे। मेरे उसे खुद ही अटैक कर रहा है। मार बेंजम, सभी खुद ही मार रहे हैं। ऐसे पैसे नहीं हुआ। ओह नाइस, गुड। ओह वेरी नाइस यार। खुद ही मारे जा रहे हो। अबे इसने इतना जबरदस्त यूज किया terrain transmutation। Fuck, I'm impressed। बहुत ज्यादा impressed हूँ मैं। Like उसने enemy ने मुझे मैच कर दिया। मैच का मतलब ये I cannot control my character। एंड में देखो खुद पागल हो गया, कुत्ता हो गया, बहन मारे जा रहा है।
लेकिन मैक की अच्छी बात है वो अपने क्लोसेस्ट बंदे को अटैक करता है और एक ही बचा था। इस बहाने हमने लेवल अप भी हो गए। मजे की बात ये है कि हमारा कैरेक्टर सारी फाइट्स अकेले कर रहा है और कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा। ये गेम टैक्टिशियन खेलनी चाहिए थी तो फिर मजा। शुरू में ये गेम बहुत मुश्किल थी यार। What's that, Chief? मुझे याद है मैं मैगी से लड़ रहा था तो वो टी को यूज कर रहा था यार। मैं वंडर कर रहा हूँ मैं नो फैब जा सकूंगा इस रमजान। मैंने तो भाई अपने आप से कर लिया कि मैं उस नो फैब के बाद अब नो फैब कर रहा हूँ ना। नहीं मैंने काफी कोशिश की दरमियान में दैट फोन छोड़ दो, फैब करूँ मैं फोन छोड़ दो। एंड होता पता है क्या होता ये है, नहीं आप हिला रहे हो, आप रगड़ रहे हो, आप जला दो अपने लर्न को, लेकिन वो मानता needs that craving for porn. You need to kill it. You need to fuck it. कि लर्न खाओ बहनचोद, मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं कर रहा हूँ ना, लाइक इनिशियली डिफिकल्ट था लेकिन इतनी मेरे अंदर विल पावर है कि आई कैन गो थ्रू इट। लेकिन एक चीज मैं दोबारा नोट कर रहा हूँ, शायद इनिशियली हो क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अभी के लिए तो डिजायर स्ट्रॉन्ग है, पहला हफ्ता है, 1.5 हफ्ता है, जो भी है। उसके बाद 4-5 महीने बाद क्या होता था, व्हेन द वेट ड्रीम्स कम बैक, मुझे याद है ख्वाब भी आते थे, वो सब भी था। लेकिन उसमें डिजायर्स कैसे के लिए, मतलब औरतों से बात करते हुए डिड आई गेट टर्न्ड ऑन, इस तरह की चीजें ना। एक सेकंड में लाइट खोल दूं, लाइट भी खराब है। ये मैं नोट कर रहा हूँ और मुझे अभी याद है एट दिस फैक्ट कि मैंने फैब किया ही इसलिए था आफ्टर दोज 9 to 10 months, क्योंकि मैं रिलीजियस नहीं था ना, तो मैंने कहा सही है करके देखता। मुझे याद है समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर, जो थोड़ा सा माय फीट वाज वेरी शिकी, उसी वक्त मैंने किया था, ऐसी मस्ती में किया था। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम किस तरह इसको काउंटरैक्ट करोगे? यार मुझे रोजे रखने, सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि मुझे फैब को कंट्रोल करना पड़ेगा।
मतलब मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब भी रमजान होते ना तो मैं दबाकर फूटा देख रहा होता हूँ बहुत ज्यादा। अब मुझे वो बंद करना पड़ेगा। अब मुझे हाँ पता है। फूटा देखते रहता है बहनचोद। दबाकर गे पॉर्न देख रहा होता हूँ मैं रमजान के अंदर, फीमेल पॉर्न 3 से। सो अब मैं इस रमजान नहीं देखूंगा। इस रमजान में बिल्कुल ठीक तरीके से रमजान को गुजारूंगा। हेलो। सुन रहे थे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। मतलब फूटा दबा दबा के देखते थे रमजानों में, सिर्फ रमजानों में ही क्यों? क्या ये एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट गॉड है क्या? और आपने हो गया नहीं, मुझे गे पॉर्न एडिक्शन 2017 से हुई है, जब से मैंने फूटा देखा। फिर मैंने अब जाके देखा पॉर्न। मेरा सवाल ये है, व्हाई ओनली रमजान? नॉर्मल दिनों में नहीं देखते थे क्या? क्या रमजान में एक्सेसिवली देखते होते? मेरा रमजान में ये होता है कि हर रमजान में एक्सेस देख रहा होता हूँ क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती, और डोटा भी खेल रहा होता हूँ दबाकर, और मैं कुछ नहीं स्केच करता, और बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए सो रहा होता हूँ। हर दिन 3 डोटा मैचेस खेलता हूँ, जिसमें से 2 जीता हूँ, एक हार। घंटे फूटा पॉर्न देखता हूँ, कुछ ड्रॉ नहीं करता, और बाकी सारे टाइम सोता रहता हूँ, नहीं जाता। इस दफा मैं स्विल चेंज करूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि रमजानों में क्योंकि भूख की कंट्रोल की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें, उसकी वजह से तुम रेस्ट ऑफ द टाइम गुजारते हो काफी to put up on and sleeping. इनका लाइव बीच में कट गया था, पता है? मेरा? यस, आया कागमी का लाइव चलना शुरू हुआ था। अभी आ रहा है मेरा लाइव? किधर? okay. हाँ आ रहा। हैंग तो नहीं हुआ? नहीं फिर खत्म हो गया। खत्म हो गया मेरा लाइव? पीछे आपको इसलिए तो बुलाते हैं। नहीं चल रहा है वापस खोला है तुम्हारा, नहीं चल रहा है तुम्हारा लाइव। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन मसले हो रहे हैं। हाँ कुछ आया है साइट पे देखो। Skip frames detected 25% over last 2 minutes. क्या हो रहा है? Enable performance mode in the editing context menu. ठीक परफॉर्मेंस मोड भी है रुको। क्या हो रहा है तुम्हारा लाइव? बार बार हैंग हो रहा है। अबे बंद हो गया। कुछ हुआ था, कुछ something fucking happened. कुछ मुझे भी मैसेज आया है like there's something new. चेक करते हैं क्या हो रहा है। चल रही है दूसरी गेम स्टार्ट